अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ सीवी कि एक्चुअल में सीवी लिखते कैसे हैं। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले हमें सेंटर में करिकुलम वाइटी एज अ हेडिंग लिखना है एंड देन हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नाम ले लेता हूँ, लाइक शुभम गुप्ता। सो सबसे पहले हम लिखेंगे शुभम गुप्ता एंड फिर उसके बाद से जस्ट उसके नीचे उनकी फुल डिटेल्स एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर लाइक एंड यू कैन ऐड ईमेल। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव एज अ सब हेडिंग। एंड नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड योर करियर गोल्स। आपके पर्सपेक्टिव क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल टू वर्क इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन एक्सपीरियंस इन बुक कीपिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल डाटा। एंड इसके बाद से हम लिखेंगे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपने कॉलेज कहाँ से करा फॉर एग्जांपल। एंड नेक्स्ट आपने बीकॉम करा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, रामजस कॉलेज से 2018 में। एंड उसके बाद से लिखेंगे अगले सब हेडिंग में हम लिखेंगे स्किल्स, आपके पास कौन से स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल फेमिलियर इन टैली, ERP एंड क्विक बुक्स। एंड फिर हम अगला सब हेडिंग में लिखेंगे कि आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस कितना है, इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल वर्क एज एन इंटर्न विद आसिस एसोसिएशंस फ्रॉम May to August in 2017। एंड देन इसके बाद से लिखना है अपनी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नोन, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड यू नॉट फॉरगेट इन योर CV। सो फर्स्ट थिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ETCs। एंड सेकंड थिंग एजुकेशन डिटेल्स लाइक आपकी स्कूलिंग, कॉलेज डिटेल्स एंड एनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एनी प्रोफेशनल डिग्रीज, ETCs। And third thing special skills, like if you have any kind of special skills you can mention in your CV, that would automatically enhance your CV। And fourth thing achievements, कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं, लाइक कोई अवार्ड, कोई स्कॉलरशिप, कोई फेलो। एंड फिफ्थ थिंग वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस then you should mention। And sixth and last extra curriculum activities, like you can mention any special hobbies, any special talent that you have। And yeah guys, you can pronounce CV यानी कि curriculum vitae in two different ways। First one in British English you can pronounce curriculum vitae and second one in American English you can pronounce curriculum vitae। And trust me guys, ये दोनों के दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। एंड एट द एंड मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, बी योर सेल्फ मैन, जस्ट बी योर सेल्फ, दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस।